Hello everyone, welcome to my new video. This is the video for those people who are traveling to Doha, Qatar and staying in Discover Qatar shared accommodation. So please watch this video till the end and I will share full information. I will try to make this video as short as possible and cover all the things which I am going through. COVID test. नाक से हाँ जी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है ईचिंग टाइप मुँह छोड़ दीजिएगा गार्ड लगे भाई। सर आपका क्या नाम है? दीपक जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, धन्यवाद। चलते हैं, रिपोर्ट का वेट करते हैं। It is necessary to do RT-PCR COVID test before 72 hours from your flight. If you do not have RT-PCR test report, you are not eligible to enter in Delhi airport. बोर्डिंग होने जा रही है। अभी तक तो सब कुछ सही है। दोहा पहुँच फोन करते हैं घर वालों को। 50 मिनट में पूरी की जाएगी। इस रात के मुख्य विमानी कप्तान गोविंद कुमार है, सर कप्तान अर्चित सूद, हमारे आज के कर्मदल कोमल, नुपुर, वैशाली और मैं डेलिवरा आपकी मुख्य कर्मदल हूँ। आज हम भले अलग रूप में हैं पर मुस्कुराते हुए आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह विमानित उड़ान से पहले विस्तार पूर्वक सैनिटाइज किया गया है। अपनी और अपनी सहयात्री की सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि उड़ान के दौरान फेस मास्क और फेस शील्ड हर समय पहने रखें और अधिकतम समय तक अपने सीट पर ही बैठे रहें। आपकी सुरक्षा के लिए हम आपकी सेवा में हैं। धन्यवाद। Hours later. कृपया ध्यान दीजिए, हम दोहा हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और सामान कक्ष न खोलें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। कृपया अपने सामने वाले रो के यात्रियों के प्रस्थान के बाद ही आप अपने सीट से उठें। ये आपके और आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए है। आप अपने सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में रह न जाए। सामान कक्ष सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान कर लें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद।
When you open your Etraj app, you have to enter your mobile number and your Qatari ID number. Then you will get the OTP. Enter the OTP in your Etraj app and the digital code will turn green. Then only the airport security will proceed your further formalities. Make sure you have your printout of your entry permit. Digital copy is not allowed. Printout of your quarantine Mechanism Motel shared accommodation booking is also required. After doing the immigration and the security check, take your baggage and go to the Discover Qatar desk, which is near to the baggage belt number 1. At Discover Qatar desk, they will give you a coupon and the person will take you towards the bus. Bus will take around 1 hour from airport to the motel. After reaching the motel, they will enter your name and the food preference. After they will allocate 16 people one villa. In a villa there are 8 rooms with one common kitchen. This is our villa. There are 8 rooms. 1, 2, 3, 4. There is a kitchen. The villa is not that great but not that bad also. I have no complaint with the villa. The villa is newly made and everything is new. My room is upstairs. Go there. Meet Mr. Roy. Mr. Roy is my roommate. He is working for Qatar Petroleum. This is my room. Sorry, everything is not so prepared. This is my bed and my roommate bed. The lights are new. We have our own room locker. There are AC switches and light switches. This is for our bathroom. We have a mirror, toilet, shower area, geyser and the wash area. These products are ours. And this is our room overview. This is my bed. They give us and shampoo, soap, toothpaste, dental kit and shaving kit. That's it. Breakfast at 7 a.m, lunch at 12 noon and the dinner will come at 7:30 p.m. The food truck will come and check the list outside the door. The food preferences are written on the list. Whether you need a veg or non-veg, they all written on the list, as you can see. You believe me or not, the food is really great. It's fresh, tasty and healthy. Drinking water is also provided near to the door. These are our food boxes. On top there are labels for veg and non-veg. Best thing is that the people are very helpful and listen if you say something. Our shower area drainage is blocked. We complain and it's rectified within an hour. कल रात हम बहुत लेट पहुंचे थे तो शायद स्वैप टेस्ट आ जाए. अभी हम जा रहे हैं स्वैप टेस्ट के लिए दोबारा. Because we arrived so late last night, today now we are going for the swab test, which is in nearby building. This is the whole process which will happen if you are coming to Doha. I hope this video will clear all your doubts and give you little information regarding Discover Qatar shared accommodation. Till then, stay fit and stay happy. Keep drinking water. Talk to people around you, but keep social distancing and wear a mask. Make this 14 days period useful. Accommodation having no Wi-Fi, so bring books and magazine to read. If you have any questions which I am not able to cover, please comment down below. And yes, do not forget to subscribe my channel, hit the like button and share this video. Till then, take care. Namaste.